हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं आईएलटीएस वर्सेस पीटी। सो बेसिकली आप में से कुछ सोचते होंगे कि पीटी करना है और कुछ सोचते होंगे आईएलटीएस कर रहे हैं। कुछ को समझ में नहीं आता होगा कि आखिर पीटीई करें कि आईएलटीएस करें। तो आज वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। पर्टिकुलरली यहाँ होने वाला है महिमा मैम वर्सेस निष्ठा मैम, that means IELTS versus PTE. So Nishta ma'am, let's start with PTE. Tell me something about PTE. Okay, so hello to everyone. PTE basically IELTS की तरह ही इंग्लिश टेस्ट है, बट PTE जो है अभी तक सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेड नहीं है। जैसे IELTS ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, बट PTE वहाँ पे थोड़ा सा जो है उसका स्कोप नैरो हो जाता है। बट इफ यू आर specifically aiming for Australia, New Zealand admissions, for that you can for sure opt PTE exam. PTE का जो एग्जाम होता है वो completely computer based होता है, as IELTS में आपको पेपर पेन बेस्ड भी मिलता है, but PTE is strictly computer based. So सबसे main difference तो this is that we have in IELTS and PTE. Okay, that means कि if you don't have strong command over computers या typing issues है तो वहाँ PTE आपके लिए एक better choice नहीं होगा than IELTS better. Yes. Is better for you because the speed, the use of computer, though it is not a big deal. Yes, yes. You don't. When you will actually try for yourself and आप classes वगैरह लोगे, और also if you are doing it for yourself, once you start preparing for it, आपको अपने आप चीजें समझ में आने लग जाएंगी. It's not very hard. ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते अगर आपको कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है. It's very basic things जो आपको एक बार स्टार्ट करने पे for sure समझ आने लग जाएंगे. Okay, if I talk about IELTS and IELTS, as Nishta ma'am told you that it is accepted worldwide. So IELTS has 4 modules. Again, it is an English testing system. Actually, they want to check that this is a test which checks that whether you will be able to survive in another country. That means if your English level is up to that level, that it will help you to survive in that particular country. So it includes reading, listening, writing, speaking, similar to PTE. But here what is the thing is that you have a separate module reading, listening, writing and speaking, and you have separate timings for that. So if I talk about first of all about listening, then IELTS listening lasts for about, you can say 20 to 25 minutes. If I talk about IELTS listening, then it lasts for about 27 to 30 minutes, and there are 4 sections in that. First section, second section, third section and fourth section. एक्चुअली जैसे जैसे सेक्शन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ जाती है, एंड पर्टिकुलरली फोर्थ सेक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है. सो स्टूडेंट्स face some problem in that, but if you have a good command over your listening skills, if you listen and watch movies, then definitely if you listen to songs, so listening becomes quite interesting for you. और मुझे लगता है निशा मैम, listening is the most easiest module in IELTS writing. In IELTS, listening is the most interesting module because listening सबसे ज़्यादा scoring है, और listening जितना भी मैंने स्टूडेंट से बात की, they really enjoy it. You have 40 set of questions in that, and वो 40 questions आपको एक handout दिया जाएगा, and from 1 to 40 questions you have to answer that. बीच में they will give you time also after every section to read the question first. मतलब जैसे section 1 start हुआ, so they will give you time to first read the questions and then the audio will start. And then first you have to answer the questions, try to answer it on handout only. After that, in the end, after 40 questions, you will get 10 minutes to transfer your answers. But listening में एक बहुत बड़ा issue ये है कि if you don't know spellings, if you are bad at spelling, तो अगर आपका आंसर ठीक भी है लेकिन अगर स्पेलिंग गलत है तो you will not get good score for that. So you have to be extra cautious about that. What about PT listening? मुझे लगता है PT की listening tough है. नहीं, पीटी की लिसनिंग टफ नहीं है. इनफैक्ट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आईएलटीएस में तो क्या है कि एक ही पैटर्न चलता रहेगा, दैट यू हैव टू लिसन टू दैट ऑडियो और आपको उसी तरीके से आंसर्स करते जाने हैं साइड बाय साइड. बट इन पीटी लिसनिंग देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग टास्क. ट्रस्ट मी, अगर आप पीटी करने बैठे हो तो एटलीस्ट आप बोर नहीं होंगे. तो किसी को टाइम पास करना है अगर अच्छा, तो वो पीटी जरूर करे. आईएलटीएस तो फिर भी बोरिंग हो जाता है. सो लेट मी टेल यू कि लिसनिंग में होता क्या है पीटी में. So there are 8 tasks in total. आपको ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरीके के questions आते हैं. No, there are 8 tasks और सब different होते हैं. In this, the first one is summarize spoken text. Second one we have multiple choice questions. इसमें आपको दोनों तरह के questions मिलते हैं. These are 2 different tasks only.
वन इज सिंगल आंसर, उसमें आपको एक ही आंसर चूज करना होता है, वन इज मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, उसमें आपको 2-3 आंसर सिलेक्ट करने होते हैं अपने। द नेक्स्ट वन वी हैव इज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, उसमें बहुत सिंपल होता है, जस्ट एक पैसेज में आपको जो ऑडियो में वर्ड्स रिप्लेस्ड है वो आपको सुन के उनको बस हाईलाइट करना होता है, दैट इज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। देन वी हैव मिसिंग वर्ड्स, उसमें सिंपल सा है, दे विल से पैसेज, उनकी ऑडियो में एक पैसेज होगा और लास्ट के कुछ लाइंस वो बीप कर देंगे, सो यू हैव टू गेस कि लास्ट में उन्होंने क्या बोला होगा। इफ यू हैव लिसनड इट वेरी केयरफुली तो आपको लास्ट में पता लग जाएगा कि ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। देन वी हैव लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, बस आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है दैट व्हाइल रीडिंग दैट लिसनिंग पैराग्राफ एंड लिसनिंग टू दैट ऑडियो, आपको बस बीच में जो ब्लैंक है उस ब्लैंक को फिल करना है with the correct spelling of course। and the last one, इसको हम बहुत important मानते हैं हमारे PTE का, that is write from dictation। इसमें भी आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है and that the audio you have to type it on your board। so yes, this is all about PTE listening, not at all boring like IELTS, and it is very interesting कि different question types हैं and आपको मजा आने लगेगा जब एक बार आप इसमें indulge हो जाओगे तो। so this is about PTE listening। Listening of IELTS is also interesting, ma'am. Okay, I think the dictation part of PTE listening is very scoring, if I'm not yes, right from dictation is very scoring if you have the good knowledge of spellings and everything, and your listening is also good, so for sure in PTE due to right from dictation जो आप अपना score है वो जरूर upgrade कर सकते हो। Okay, that's great. So and also I would like to mention ma'am, जैसे कि हमने बताया कि PTE की right from dictation बहुत important है, so for this also we have one video जिसमें उसकी specially tips and tricks बताई गई हैं जिससे आप उसका score जो है वो upgrade कर सकते हैं। so if you want to give it a watch then please do। yeah, definitely you should do, because it's very important. PTE is all about tips and tricks. So if I talk about PTE, then I think there are 20 set of questions in PTE altogether। yes ma'am, आपको कोई different time नहीं मिलता है, जैसे हमारा IELTS में different time allotted है सारे modules के लिए, यहाँ पे आपको कुछ time नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग-अलग module के लिए अलग-अलग time है। total आपका 2 hours का test होगा, in this 2 hours you need to complete all of the 4 modules। okay, whereas in IELTS listening के लिए you have first you have to listen to the audio as I told you 27 to 30 minutes, उसके बाद you get 10 minutes to transfer your answers। reading में again you get separate 1 hour, उसको भी extra time में मिलता है to transfer your answers। writing के लिए again you get 1 hour, and speaking का interview होता है जो आपके टेस्ट के पहले भी हो सकता है, और आजकल तो it comes 1 week before also, या टेस्ट के बाद, मोस्टली आजकल टेस्ट के पहले ही हो रहा है, बट कुछ केसेस में वो बाद में भी हो सकता है। तो स्पीकिंग इज नॉट ऑन द सेम डे, speaking is either before that or after that. Mostly it is before that, and be ready that it can come even 1 week before, so you should be ready for that। so if I talk about IELTS speaking now, so speaking has 3 parts। first is general questions। okay, it is an interview, okay, cabin interview, they will be taking your interview there, so it again it varies, for some students they take interview for 15 minutes, for some it goes for like 10 minutes, for some it goes for 12 to 13 minutes, so many a times it depends on the examiner। so basic thing which you have to take care of in speaking is the fluency one। so part 1, part 2 and part 3, there are 3 parts। part 1 is general questions, where they will ask you general questions related to general topics, your hometown, hobbies, or anything related to general things। in second part they will give you a topic, they will give you 1 minute to prepare on that topic, and then you have to speak on that topic for 2 minutes। this is really very good, and they record your answer, so be very careful, be very clear in your speaking। and third part is follow-up questions, jahan you have questions related to your Q card topic। so almost ye 3 parts hain। if you are fluent, minimum 6 is guaranteed in that, and if you want above 6, then you should be careful about idioms, fluency, of course, vocabulary, connectors, good sentence structure, and many more things। what about PTE speaking? PTE speaking में मैं कहूँगी कि I think इतना variations नहीं है, because in IELTS तो जैसे आपको बात करने का बहुत मौका मिलता है ना, you can share your views and everything, but in PTE speaking ऐसा कुछ नहीं है, you don't have to like brainstorm very much। what happens is there are 5 tasks हैं आपके पास इसमें, and the first task is read aloud। there is nothing
nothing, just there will be one paragraph and you need to read it aloud. Fluency होनी चाहिए and pronunciation of course आपकी अच्छी होनी चाहिए. PTE speaking is all about fluency and pronunciation. If you are having a good fluency and you correctly pronounce your words, then you are good to go for PTE. So this is the first task, and the second one is repeat some tense. जैसे हमारा write from dictation है the most important one, वैसा ही हमारा repeat sentence है the most important. हम इसको PTE के king and queen कहते हैं. Repeat sentence is our queen and write from dictation is our king. तो सोच के देखो कितना important होगा. So इसमें भी हम सिर्फ एक sentence आपको सुनाया जाएगा and you need to repeat it as it is. इसमें भी fluency and pronunciation plays the main role. Then next we have describe image. Image will be displayed on the screen and you need to describe it for at least 40 seconds. You just have to speak like whatever you can see in the image, that is your describe image. The next we have is retell lecture. In retell lecture there is one audio that is played. It is of 1 or 1 to 1.5 minutes. So in that a lecturer is there and he is delivering a lecture. You have to listen it, you have to make the notes out of it, and then you need to tell it in your own words that what did you understand in this lecture. Again, fluency, pronunciation, main role. The next one that we have is answer short questions. This is very easy. They will just ask you a simple question. For example, where does the sun rises from? So everyone knows it's east, right? So just you have to answer east and there it is. You're good to go in the answer short questions. This is all about PTE speaking. Very simple, nothing to think about, and everything is on your screen and you just need to say it. So ma'am, if some student is there and he or she is not good at fluency in speaking, so will it be a problem? Of course, if you are not fluent enough, it will be a problem for you in PTE because without fluency and pronunciation, PTE speaking is nothing. And PTE speaking is the most important module of all the 4 in PTE. So yes, it is very important. I asked this question because IELTS speaking में ना pronunciation और content थोड़ा इधर उधर हो जाएगा ना, तो it will work, but fluency नहीं जानी चाहिए. तो मुझे लगता है speaking of IELTS is better, क्योंकि यहाँ अगर आपका accent थोड़ा सा गड़बड़ है या हल्का सा pronunciation problem है, हाँ, of course you cannot score above 7 in that, but if you are aiming just for 6 or 6.5, तो बस अपनी fluency ठीक कर लो, थोड़ा बहुत pronunciation, थोड़ा बहुत grammatical error, या even if you miss out, content is not in relation to the topic भी sometimes चल जाता है, but fluency नहीं होगी तो in speaking you will not even get 6 marks. And PTE content is very important. अगर आपने थोड़ा सा भी इधर से उधर बोल दिया या कुछ कीवर्ड आपने जो मेन कीवर्ड है वो नहीं बोला, so obviously it is of no use. तो थोड़ा सा हाँ यहाँ पे PTE speaking में IELTS speaking से हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं. It's okay. Listening में हम आगे थे. Listening में हम आगे थे. See अभी 1 on 1 score हुआ है. ठीक है, listening में हम आगे थे, PTE में ये लोग आगे हैं. Let us see. अगर आपको लगता है कि they know फिर IELTS की तरफ ही जाना बेटर है, I think so. अभी 1 on 1 हुआ है. Okay, jokes apart, let's move. जैसे हमने कंटेंट की बात की, तो अब हम बात करते हैं ऐसा पार्ट स्पीकिंग का, ऐसा मॉड्यूल जहां कंटेंट, IELTS का ऐसा मॉड्यूल जहां कंटेंट प्लेज अ पिवटल रोल, दैट इज राइटिंग. और राइटिंग consists of 2 parts, task 1 and task 2 in IELTS. So task 1 में you will get a bar graph, line graph, pie chart, flow chart, table or a map, any one out of these, and you have to write 150 to 180 words on this. ठीक है, and paragraph will be 3 to 4 paragraphs you have to frame. Total you will get 1 hour and it is recommended that you should spend 20 minutes on task 1. तो bar graph, line graph, इसमें if you have a good tutor or if you understand, then you have to learn, just practice 10 to 15 sentences and the task is done almost. So task 1 is about bar graph, line graph, report writing. Again यहाँ पे you are judged on the basis of your grammar, your vocabulary, connectors, that is cohesion, and your grammar. So these 4 need to be really good, and particularly in task 1 you should be careful about which tense to be used, because sometimes it is in past, sometimes present and sometimes future. If you talk about task 2, यहाँ content again, जैसे वहाँ king queen repeat sentence थे, तो यहाँ writing की बात करें तो यहाँ king queen आपका कंटेंट है. अगर टास्क 2 में आपने क्वेश्चन गलत समझ लिया, टास्क 2 is essay writing. They will give you a topic and you have to write an essay on that. The topics are not like your school topic. The questions can be agree, disagree question, problem solution, advantage, disadvantage. These kind of questions you get. There are 5 categories. So इस पे कोई based कोई भी एक question आ सकता है.
For example, if there is a question that many people believe that homeschooling is better than normal schooling, what is your opinion regarding that? So you can get questions, big questions like that, and you have to answer every part. So if you miss out any part, you will not get even 6. In writing, scoring 7 is really a big deal. So you need to really work hard if you want to score 7. Again, in writing task 2 also, you are judged on the basis of your grammar, your coherence, vocabulary, and the king of this task 2 is views. If your views are not in sync with the question, अगर question के according आप views नहीं लिखते हो, तो you will not get a good band score. Task 2, it is recommended that you should spend 40 minutes. I already told you कि writing task में you will get 1 hour, and out of that 1 hour you need to spend 40 minutes on task 2 and 20 minutes on task 1. And task 2 is really more scoring than task 1. So but the thing is that you have to focus on both the tasks, because then only you will get a good band score. And word limit is very important. It is 150 to 180 words in task 1 and 250 to 280 words in task 2. So what about your writing? PTE. Okay, so जैसा कि हम डर गए सुन के आपको PTE राइटिंग से आपको डरा दिया। आप PTE राइटिंग से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। If your English level is not that good, अगर आपका कमांड इतना अच्छा नहीं है इंग्लिश पे, so PTE राइटिंग is all for you, क्योंकि उसमें we just see, AI is there for the evaluation, right? So they are just seeking for some keywords that are related to the topic. They will actually not see the synchronization and the views, content, and everything. It doesn't matter. Your grammar should be okay, and some keywords should be related to the topic. That's all. इसमें 2 टास्क होंगे आपके पास. One is summarize written text and one is essay. Essay जैसा कि मैम ने आपको टास्क 2 का बताया, वैसा ही हमारे पास एक essay आएगा. But even if you follow a template in this or anything, so for sure आपको marks इसमें आएंगे ही आएंगे. But yes, keep in mind कि आपको वो जो keywords हैं वो जरूर उसमें mention करने हैं with the correct grammatical structure. Then for sure आपके writing में marks कोई नहीं रोक सकता है, आएंगे ही आएंगे. The second task, that is summarize written text. उसमें आपको एक passage दिया जाता है and you need to give a summary of that in just 1 line. How easy could it be? Like, see, एक लाइन में सिर्फ अब आपको उसको summarize करना है. आपको बस ये ध्यान रखना होता है the grammatical structure is all right and it is making some sense. That's it. This is all about PTE writing. The easiest of all. You just need typing practice. Otherwise, PTE writing is the easiest of all. I agree with ma'am. Summarize written text is something like you have to write in 1 sentence. It means that sentence can be of 3 lines, but full stop will come once. तो ये बहुत ध्यान रखना होता है इसमें. And you can use connectors to link your sentences. I guess you can use moreover, for example, furthermore. Yes. But and these connectors are useful. Yeah, I agree that PTE writing is comparatively much easier. Yeah, but I think ma'am in PTE the scores are interlinked. Like IELTS में तो reading score will come from reading only. Yes. Writing score will come from writing only. लेकिन PTE में कुछ twist है, तो वो कहानी में twist हम मैम से पूछते हैं. This is one thing that all the tasks that you are having is interlinked with each other. As in, जैसे मैंने आपको speaking का read aloud बताया, तो वो आप read कर रहे हो कुछ, right? तो speaking में तो वो marks जा ही जा रहे हैं, but उसके साथ वो marks आपके reading में भी जा रहे हैं. तो जो आपका overall score आएगा, it's not like कि आपके reading में अगर 60 आए हैं तो आपके overall में reading 60 ही है. No, it's not like that. आपके reading के marks speaking से भी आ रहे हैं, राइटिंग से भी आ रहे हैं. सो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड, और तो जाके आपका एक ओवरऑल स्कोर बनता है. लिसनिंग के बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिसकी राइटिंग में इन्वॉल्वमेंट है, तो इस तरीके से सब कुछ इंटरकनेक्टेड है एंड देन आपका एक ओवरऑल स्कोर जो है वो बनता है. इन राइटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया ये 2 टास्क एंड वेरी इजी टू स्कोर, राइट? लेकिन फिर भी राइटिंग में मार्क्स नहीं आते. व्हाई इज दैट नाउ? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे किंग है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, उसके मार्क्स लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग में भी जाते हैं. एंड अगर वहां पर आपने मिस्टेक्स कर दी हैं तो आपका लिसनिंग में तो स्कोर डाउन होगा ही होगा, बट आपका राइटिंग में भी स्कोर डाउन होगा. So these are some things that we have to take care of. Exactly, because यहाँ ये प्रॉब्लम आती है. एंड राइटिंग में जैसे मैम ने ये दो टास्क है, लेकिन एक होता है रीडिंग राइटिंग फिलअप्स, जिसमें स्टूडेंट्स को रियली बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसका स्कोर रीडिंग में तो जाता ही है,
लेकिन राइटिंग में भी जाता है। बट कभी कभी ये चीज इसको इजी भी बना देती है, जैसे आईएलटीएस की रीडिंग काफी टफ लगती है बच्चों को, है ना, लेकिन पीटी की रीडिंग में रीड अलाउड जो है वो आपके रीडिंग को के स्कोर को बहुत बूस्ट करता है, क्योंकि रीड अलाउड में आपको अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारना है, सामने एक टेक्स्ट है आपको वो पढ़ना है। बट आईएलटीएस रीडिंग में आपको पैसेज पढ़ना है, उसके आंसर्स देने, आंसर्स गलत है तो you are gone. Mostly students face a lot of problem in IELTS reading particularly. So now let's talk about reading only. Exactly. So reading की बात करें तो IELTS reading is completely different from the PTE reading. दो passages इसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, लेकिन जो IELTS के passages होते हैं reading के वो बहुत लंबे लंबे passages आते हैं. You get 3 passages total. Again you have 1 hour for reading. कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता टू ट्रांसफर योर आंसर. सो इट इज रिकमेंडेड कि जैसे जैसे आपको आंसर मिलता जाए, rather than writing it in your question paper, directly transfer it to your answer sheet. Be very clear and specific. So you get 3 passages and it is recommended that you should spend 20 minutes on each passage. वैसे तो हम कहते हैं जैसे आपका एग्जाम नियर बाय आए तो you should start practicing for 18 minutes and 18 minutes. And last में you should come back to those questions which are tricky. So you get question types like fill-ups. स्कूल में आपने unseen passage किया हुआ है ना, बस वैसा ही है, लेकिन unseen passage छोटा आता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है. टोटल you have 40 questions to answer, 3 passages. बेसिकली देखा गया है कि लास्ट पैसेज टफ होता है, लेकिन कभी कभी इट वेरीज, कभी कभी सेकंड पैसेज भी टफ हो जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हाँ, इसमें एक चीज जो अगर आप फोकस करें तो बहुत अच्छी है कि आंसर्स लाइन वाइज मिलते हैं. दैट मींस मोस्टली अगेन बट 3% 2% चांसेस आर दैट दे विल नॉट बी इन सेम ऑर्डर, बट मोस्टली दे आर इन ऑर्डर. लाइक अगर एक आंसर फर्स्ट पैरा में मिला है तो नेक्स्ट फर्स्ट उसी के बाद मिलेगा या नेक्स्ट पैरा में मिलेगा. सो दैट हेल्प्स यू. देयर आर मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स व्हिच we have already discussed in many of our videos at Prep Life Global, so you can check out that. So reading में वही है 1 mark for 1 answer. If you do any silly mistake कि जैसे article A and the आना था आपने नहीं लगाया, even answer सही है वो wrong माना जाएगा. अगर instructions and do not write more than 2 words और आपने 3 words का आंसर लिख दिया तो भी नहीं माना जाएगा. एक और जो बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, इंस्ट्रक्शंस में जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी होते हैं रीडिंग में, तो इंस्ट्रक्शंस में दिया है राइट ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और आपने आंसर्स में लिख दिया ट्रू की जगह यस या फॉल्स की जगह नो, तो यहाँ भी आपका आंसर गलत माना जाएगा इवन इफ ट्रू था और आपने यस लिख दिया. सो बी वेरी केयरफुल. इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी फॉलोड. अगर लिखा है राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स, राइट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, तो ट्रू फॉल्स की जगह आप यस नो नॉट गिवन नहीं लिख सकते हैं. IELTS reading के लिए you need to really focus and concentrate. Otherwise, if you work hard, then it is not a big deal. It's really interesting if you want to gain a lot of information. PTE. Okay, so obviously reading है तो आपको read तो इसमें भी करना ही पड़ेगा, but comparatively काफी कम. इसमें आपको 5 टास्क अगेन मिलते हैं, और the first one that is reorder paragraphs. इसमें आपको कुछ jumbled sentences मिलेंगे और इन jumbled sentences को बस आपने order में लगाना है. There are 5 sentences और आपको 5 sentences को बस एक particular order में लगाना होता है. Then the second task that we are having is multiple choice, and the third one is also multiple choice. एक में single answer, एक में multiple answer, as we discussed in listening. Then the next one is reading fill in the blanks. इसमें आपको fill ups करने होते हैं by reading that paragraph. The next one is reading and writing fill in the blanks. बस जो difference इसमें इतना है कि reading fill in the blanks में आपको जो मार्क्स हैं आपके वो सिर्फ रीडिंग में जाएंगे, एंड रीडिंग एंड राइटिंग में आपके जो मार्क्स हैं वो साथ में राइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट यू हैव इन देम. इसमें पर्टिकुलरली आपको रीडिंग तो थोड़ी सी आनी ही चाहिए, बट आपका ग्रामर अगर स्ट्रांग है तो यू कैन गेन मार्क्स इन द रीडिंग मॉड्यूल. तो इसका मतलब है ये ड्रॉ होगा, क्योंकि रीडिंग पीटी की भी टफ है और रीडिंग IELTS की भी टफ है, तो ऑन एंड ऑल सेम ही चला गया. सो अच्छा, रीडिंग में देयर आर सम ना वन क्वेश्चन विद इट्स नेगेटिव मार्किंग. व्हाट इज यस the thing that MCQ है जो multiple answer वाले, in listening also and in reading also, ये दोनों ही आपके जो है नेगेटिव मार्क
कैरी करते हैं। अगर आपने एक आंसर अचीव कर दिया 1 मार्क गलत कर दिया है देन -1 फॉर दैट। हाँ, लेकिन आइल्स में ऐसा कुछ नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। तो आप we have told you the pros and cons. Anything which you feel that which makes PT quite different from IELTS? Quite difference is that in IELTS, like whenever you practice, तो क्या है कि for example in exam you find the handout is very tough, तो वो tough ही है, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, right? लेकिन PT में ऐसा नहीं है, जो आप practice कर रहे हो it will for sure bring fruits to you, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे आपको कोई वोकैबुलरी नहीं देखनी होती कि आपको मतलब पता है या नहीं पता। तो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर आपको वहां पे जाके कोई वोकैब नहीं समझ आई आइल्स में, है ना, तो फॉर श्योर यू कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इतना कोई रोल प्ले नहीं करती है ये चीजें। सो आई सपोज कि if you practice it every day और रोज बहुत determination के साथ करोगे then for sure you can have higher bands and meet। Okay, so the gist is that both have their own importance. कुछ चीजें IELTS में इजी हैं, कुछ चीजें PT में इजी हैं, कुछ केसेस में PT बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ केसेस में IELTS बहुत इंटरेस्टिंग है। One thing that I would like to mention is कि आइल्स का एग्जाम देके आते हो, उसके बाद 13 दिन आप टेंशन में रहते हो कि क्या हुआ क्या हुआ। बट इन पीटी फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ में एग्जाम देके आ रहे हो और आपको वापस हिसार आना है, तो हिसार आने तक आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कि आपका क्या रहा है। तो टेंशन में एटलीस्ट हमें नहीं रहना पड़ता। इन 2 आवर्स मैक्सिमम 5 डेज चला जाता है, बट इन वेरी रेयर केसेस, बट मोस्टली 2 आवर्स में आपको जो रिजल्ट है वो आपका पीटी का पता लग जाता है। हाँ, सो इट इज एन एडवांटेज बिकॉज यहाँ होता है कि स्टूडेंट को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया देन द पर्सन हैज टू थिंक, तो इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो पीटी की ये एक बात सही है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो, कि कुछ में तो पीटी इज नॉट वैलिड, तो वहाँ आपको IELTS ही करना पड़ेगा। सो डोंट वरी, दोनों ही अपनी जगह इजी है और प्रेप लाइफ ग्लोबल है आपके लिए टू मेक द थिंग्स मोर इजियर फॉर यू। वी हैव लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू IELTS and now we have started with PTE also. So please write in the comment box anything else which you want to know about PTE or IELTS. We are there to help you. Apart from this, if you think that we need to make some videos on particular question types, then do tell us. Any other queries, please do write in the comment box. Thank you for giving your precious time.